Are you watching the opening action of markets on Money9? I'm Sakshi, Batra, and you can see a sea of red at open when you talk about the markets today. We did get a good handover from the Indian markets yesterday, but it's the weak global cues that have actually led to a sharp fall in the Indian market indices right at open. You can actually see the Nifty 50 trading at 14,855. That's a loss of 240 points in the opening trade. 1.5% downtick for this index, the prime index. The market breadth favoring the declines clearly, 47 declines to 3 advances at the moment. You can also see the broader market indices still in the red. 1.5% loss for the mid-cap index as well, and the small-cap index is feeling slightly lesser pinch with 1% downtick over here. There's only one stock that you can talk about in the Nifty index, and that is Bharti Airtel, that is still holding up in the green as well. But most of the stocks that are still declining in trade as far as the Nifty index is concerned is, you'll have to see, stocks like banking space, is sharply down. Axis Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, all of them down about 3 to 3.5% in trade. HDFC is pulling down the markets too with its heavyweight, 3% down for that stock as well. UPL is also down 2.7% right in trade at the moment as well. When we talk about the sectoral indices, again, the sea of red can actually be seen in all sectoral indices. All the sectors are sharply down in trades. That's led by the downfall in the Nifty Bank Index. That's down about 2.65% in trade. Look at the PSU Bank Index losing about 2.84%. So all the gains that were garnered in the previous two sessions seem to be going away. The private banking space also down about 2.5% in trade. Financial services sharply down too. It's the auto index that's also feeling the pinch at 1.5% downtick seen over there. The realty space is down by 1.5% too. Similar is the case with the IT stocks. Remember, in the US markets, because of the sharp rise in the US bond yields, overnight we've seen a sharp fall from the previous day's record high of Dow Jones that we had seen. Sharp fall has been seen in the US Walmart indices as well. And now what we actually can expect is that the IT stocks are likely to be under pressure, because it was the IT stocks that actually led the fall and felt most of the pinch in the US markets as well. Moving on to the Sensex now, what kind of a picture are we seeing here? Again, downtick of about we've definitely slipped below the 51,000 मार्क. अगर आप देखेंगे तो 50,290 के आसपास इस समय सेंसेक्स काम काज कर रहा है. 1.5% तक की वीकनेस यहां पर है और 745 पॉइंट्स का शार्प डिक्लाइन है. जो ओपनिंग हुई थी वहां से वीकनेस जो है और एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है. 30 पैक ऑफ सेंसेक्स में भी अब अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको लाल निशान ही यहां पर नजर आएगा चार्ट पर, और ज्यादा पिंच जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल स्पेस, ऑटो स्पेस, इन सभी में आएगा. इनफैक्ट आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रगल होगा कुछ भी हरे निशान ढूंढने के लिए, और बहुत ही माइल्ड तेजी है. जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, डिफेंसिव सेक्टर्स थे, आज वहां पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं पुश होते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे कि एफएमसीजी पैक, आप नेस्ले में देखेंगे तो आधे प्रतिशत तक की मजबूती है. हिंदुस्तान यूनिलीवर में 0.2% तक की मजबूती है. मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी और साथ ही भारती एयरटेल, ये कुछ गिने चुने 5-6 नाम हैं जहां पर आज हरे निशान में कामकाज हो रहा है जहां तक सेंसेक्स की बात है. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पिंच आपको आईटी में दिखेगा, फार्मा में दिखेगा, और साथ ही साथ बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस में भी दिखेगा. कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेस में भी आपको 1.5% तक की वीकनेस दिखेगी. और रिलायंस इंडस्ट्रीज कल जहां पर एक तरीके से जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, और 2-3 दिनों पहले टेक्निकल चार्ट्स पर भी इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के संकेत दिए थे, वहां पर भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है. तो भले ही आप ऑटो स्पेस से 2 व्हीलर्स की बात कीजिए या फिर 4 व्हीलर्स की बात कीजिए, सभी में आज वीकनेस देखने को मिल रही है. ऑयल एंड गैस स्पेस से ओएनजीसी भी आज प्रेशर में, और 1% तक की वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है. एमएनएम, बजाज ऑटो, इन सभी में ऑटो स्पेस से वीकनेस देखने को मिल रही है. लेकिन किसी भी बैंक को आप उठाएंगे, भले ही वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से हो या फिर पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, सभी में आज काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है. आईटी स्पेस से भी अगर आप बड़े हैवी वेट्स की बात करेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी में आज गिरावट देखने को मिल रही है. साथ ही एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में भी काफी वीकनेस देखने को मिल रही है. पावर स्पेस से एनटीपीसी पावर ग्रिड, जो कुछ दिनों पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज के सेशन में यहां पर भी ओवरऑल वीकनेस देखने को मिल रही है. तो जो मार्च सीरीज की शुरुआत हुई है वो काफी वीकनेस के साथ हुई है. देखना यह होगा कितना और प्रेशर और डोमेस्टिक ग्लोबल क्यूज हमको कितना और वीकनेस यहां पर दे पाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज काफी पॉजिटिव रहे हैं इससे पहले, जो कि अभी तक मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए आए हैं. एक और बात जो आपको देखनी होगी कि वो फॉरेन इन्फ्लोज के ऊपर होगी, कि जब यूएस मार्केट्स में इतना शार्प फॉल हो रहा है तो क्या
फॉरेन इन्फ्लोज ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे और अब अगला ट्रिगर वहां से देखने को मिल सकता है नहीं। पूरी मार्केट की कवरेज आज जारी रहेगी मनी 9 पर। अगले शो में फर्स्ट टिक में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, जब हम आपको मिलवाएंगे टेक्निकल एक्सपर्ट से, जो कि बताएंगे कि आज की इस दबाव वाली मार्केट में आपके लिए कहां पर मौके हो सकते हैं और मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करेंगे, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ।